do not get stuck. Please do not get stuck on that, because अगर I really suggest you कि you do not need to even scan for so many resources. Simply first what you can do is start from, make this book your Bible, friends. This is the book that you need to score well in the exam. अगर आपको कोई हाय गाइस, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आइल्स एग्ज़ाम होता क्या है, मैंने कैसे 7.5 बैंड लाया विद इन अ स्पैन ऑफ 2 वीक्स, एंड इसका कॉस्ट क्या है, आइल्स में कितने सेक्शन हैं, एंड ओवरऑल लर्निंग टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर यू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो कमिंग टू फर्स्ट, आइल्स एग्जैक्टली होता क्या है. आइल्स स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. ये बेसिकली हमें बताता है कि ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम के थ्रू हम कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, एंड वी कैन स्पीक इन दैट लैंग्वेज, राइट. सो देर आर 4 सेक्शंस टू इट: रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, विच वी विल कवर इन डिटेल लेटर ऑन. पहले वील कम टू द कॉस्ट फॉर द एग्ज़ाम. सो मैंने अराउंड मई अप्रैल में एग्ज़ाम दिया था इन 2023, एंड द कॉस्ट फॉर दैट वॉज अराउंड 16,400 बिकॉज आई डिड अ क्रेडिट कार्ड पेमेंट. बट अगर आप दूसरे मोड के पेमेंट के थ्रू करते हैं, मे बी से UPI समथिंग, आई थिंक थोड़ा 300 या 200 का डिफरेंस हो सकता है. आई एम नॉट श्योर कि एज ऑफ नाउ अगेन देयर वाज एनी रिविजन इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट, सो दैट यू विल ईजिली गेट ऑन द ऑफिशियल आइल्स वेबसाइट व्हेन यू रजिस्टर. नेक्स्ट कमिंग कि हम आइल्स एकेडमिक डे या जनरल डे, अगर आप कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर फर्दर एजुकेशन, देन आइल्स एकेडमिक इज़ द वन दैट यू हैव टू चूज़. आइडियली आइल्स जनरल इज़ फॉर मे बी समवन हु इज़ अप्लाइंग फॉर PR और एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जो होता है वो उसके लिए रिलेटेड है. सो हम आइल्स एकेडमिक के बारे में डिस्कस करेंगे ये वीडियो में. आइल्स में कंप्यूटर एंड पेन एंड पेपर बेस्ड मोड है, तो हम कौन सा सिलेक्ट करें. मैंने कंप्यूटर बेस सिलेक्ट किया था बिकॉज आई न्यू आई एम कम्फर्टेबल इन टाइपिंग एंड आई शुडंट हैव एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम. बट इसमें देयर आर 3 की डिफरेंसेस बिटवीन पेन पेपर एंड कंप्यूटर बेस्ड आइल्स. सो कंप्यूटर बेस्ड आइल्स में रिजल्ट्स ज़्यादा फास्ट मिलते हैं, लाइक विद इन 3 to 5 days, whereas पेन एंड पेपर में अराउंड 10 to 13 days ले लेता है रिजल्ट लाने में. सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ अर्जेंट इट इज़ फॉर यू टू गेट द रिजल्ट्स, दैट इज़ ऑल्सो वन criteria based on which you can select this exam. Also, online schedules are much more frequent than what I have seen in pen and paper. So again, that is one criteria कि आपके वो schedule पे fix हो रहा है या नहीं, whether you are available for that particular date or not. And third, lastly, what we get is that इन पेन एंड पेपर हम लोग यूजुअली जब एग्ज़ाम्स देते हैं, वी आर वेरी अकस्टम टू वो बुक में टिक मार्क करना, लिखना एंड वैसे आंसर्स देना. एंड कंप्यूटर बेस में यूजुअली सारा आपके जैसे कैट एग्ज़ाम या GMAT एग्ज़ाम में जैसे ऑनलाइन MCQ क्वेश्चन होते हैं, तो वैसे फॉर्मेट में रहता है. तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा मीडियम ज़्यादा इजी पड़ेगा. बट आई वुड रियली सजेस्ट दैट इफ़ यू आर गोइंग फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, प्लीज़ वर्क ऑन योर टाइपिंग स्पीड, बिकॉज आपको 60 मिनट्स मिलेंगे राइटिंग सेक्शन में, एंड वो टाइम पे इफ़ यू आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद टाइपिंग, तो आपको मुश्किल हो सकती है. सो प्लीज़ प्रैक्टिस. आइल्स के लिए रजिस्टर कर लिया एंड आपने स्लॉट बुक किया है, तो जो टाइमिंग ऑफ द एग्ज़ाम है वो ही देते हैं फ्रॉम आइल्स इंस्टीट्यूशन. मैं इधर स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँगी कि ऐसा एक ईमेल आता है जिसमें आपका टाइमिंग एंड सेंटर की इन्फॉर्मेशन दी गई है. बट यू हैव टू नोट दैट आपका स्पीकिंग एग्ज़ाम एक दिन पहले या बाद में हो सकता है, या सेम डे पे भी हो सकता है. मेरा सेम डे पे था विद इन अ गैप ऑफ लाइक हाफ एन आवर फ्रॉम माई रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग टेस्ट के बाद में. So you have to keep yourself available for that day accordingly. And प्लीज़ नोट कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होते हैं, जैसे उधर पासपोर्ट होता है एंड जो दूसरे डॉक्यूमेंट अगर कोई है, तो प्लीज़ इंश्योर दैट यू टेक इट. दे विल नॉट एंटरटेन एनीवन हु डज नॉट हैव द डॉक्यूमेंट्स. सो इंश्योर दैट यू टेक इट अलॉन्ग विथ यू. ऑल्सो ज़्यादा जल्दी पहुँचने की ज़रूरत नहीं है. लाइक देर आर पीपल जो 1-1 घंटे होते जाते हैं, दे सिंपली हैव टू स्टैंड आउट, दे वुडंट इवन लेट यू एंटर इनसाइड द सेंटर, राइट. सो आई थिंक अ गुड रीजनेबल टाइम इज़ अराउंड हाफ एन आवर बिफोर you reach the center, and make sure you know कि वो सेंटर किधर लोकेटेड है, सो एंड में आपको डिफिकल्टी नहीं हो. सेंटर. हाउ डिड आई स्कोर 7.5 बैंड इन जस्ट 2 weeks?
So just to give some context, था कि I am a working professional and I did not have much time to prepare for the exam. But given I have been comfortable with the language, I knew that with some practice I'll be able to score at least a 7, if not maybe like a 7.5 or 8 band. And I knew with some mock practice and all हो जाएगा. बट was पहले मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज देख लिए थे where I can give the mock test, how is the pattern of the exam and everything. But I would really suggest you कि you do not need to even scan for so many resources. Simply first what you can do is start from, so when you register with this exam, अगर this is an IELTS book that is given and इसमें सारे mock tests, what kind of words you should use, कैसे डायग्राम्स आते हैं, फ्लो चार्ट्स आते हैं, लिसनिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में क्या क्या क्वेश्चन हैं, एवरीथिंग इज गिवन इन दिस बुक. सो बिफोर गोइंग टू एनी अदर रिसोर्स आई वुड thoroughly suggest कि आप go through this in detail. And I don't think अगर you've given into this and you're scoring anywhere between 7 and above in this book, it shouldn't matter like that कि आपको कम मार्क्स आएंगे. आइडियली आपको आ जाने चाहिए बिकॉज वो मोर और लेस सिमिलर पैटर्न में है. सो कोड दिया गया है where you have to register and you will be applicable for the mocks that you have to give, and you can attend the mocks from here. I would ideally suggest you to first give one mock from this book, and what you can do is ki if you're getting anywhere around 6.5, study the material, see how it is going to helping you improve. अगर उसके बाद में still on the last mock you feel कि you are somewhere around 7 band or maybe lesser, then switch to other resources. I think one easy guide tip I can give you is मैंने YouTube resources refer किया for speaking. So over there I saw people how is their mock interview for someone who have scored around 8 band, 8.5 to 9 band in speaking. So that is how I just watched maybe one video a day. In total I would say around 4 or 5 videos देखे, and I got a knack of it, how they're introducing themselves, how is the content going, and how they're concluding themselves. Because the flow of the speaking test is going to remain same. What really changes is only the topic that you're going to speak on, and that is not something in your control. And I feel थोड़ा IELTS में ना luck based भी रहता है, because lot of time people who are comfortable with maybe non-technology topics and all, they are able to speak more about it. Like I suppose can speak more about travel than I would be able to speak about scientific or technology related topics. So though that is not something in our control, what we can control is how we introduce yourself, how we can use connecting words. इसमें सेक्शन कितने होते हैं आइल्स में? सो एज आई हैव बिफोर बिफोर, इसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग रहता है. लिसनिंग में यू हैव अराउंड 40 क्वेश्चंस एंड आपको 32 मिनट्स दिए जाते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में. एंड अगर आपको पेन एंड पेपर बेस्ड ले रहे हैं लिसनिंग के लिए, देन आपको 40 मिनट्स दिए जाते हैं, where you have 30 minutes to answer the question and 10 minutes to transfer it on paper. Reading and writing में 60 minutes are given, and speaking में around 10 to 15 minutes से आपका interview हो सकता है while giving the speaking test. Coming to reading में there are 3 paragraphs which are given to you, and आपको उस basis पे match the column या true and false या ऐसे kind of MCQs question आ सकते हैं fill करने के लिए. whereas राइटिंग में आपको 2 passages दिए जाएंगे, 2 टॉपिक्स, कभी वो ग्राफ्स के मोड में होगा, कोई डायग्राम या फ्लो चार्ट के उसमें हो सकता है, एंड यू हैव टू राइट एंड कॉम्प्रीहेंड दैट डायग्राम और समथिंग बेस्ड ऑन दैट टॉपिक जो भी आपको दिया गया है. लिसनिंग अगेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज कि आपको इंट्रोडक्शन करना है कि हाय, मतलब हु आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम एंड व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड. आई थिंक योर वन क्विक प्रो टिप फॉर यू इज़ टू ऑलवेज ग्रीट द इंटरव्यूअर एंड मे बी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आपका टाइमिंग है accordingly, and have a pleasant smile on your face and be calm. This will really help you set in a good tone with the interviewer, and definitely it shows that you are confident. So always have such nice presence whenever you're giving any kind of interview, irrespective whether it's IELTS or anything.
एंड देन कमिंग टू लिसनिंग का स्पीकिंग के लिए सेकेंड पार्ट इज़ दैट आफ्टर यू हैव इंट्रोड्यूस्ड योरसेल्फ दे विल गिव यू सम टॉपिक टू स्पीक ऑन. मेरे को यूजुअली साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत आ गया था विच आई एम नॉट रियली कंफर्टेबल विद. बट योर द मेन आइडिया ऑफ द होल एग्जाम in speaking part is that you have to keep on speaking. So not that you speak rubbish and anything which is not related to the topic, but even if you do not know much, just keep on continually speaking something on related to the topic, or close around the topic. So the moment you keep on speaking continuously, what that really helps is that the interviewer knows that you can confidently speak in that particular language. I would say ki don't stop, but take a pause wherever required. During the exam, I was sort of losing, I was in loss of words कि मैं अभी क्या बोलूँ और ये topic पे, because I did not know much. But it was very kind of the interviewer to keep on telling, sort of indicating continue speaking, because if that wouldn't have happened, then probably he would not be able to give me those many marks during my interview. So I think even they are very helpful that way, that they encourage students in an indirect manner to speak. But if we remember this from our end, that would be great. लिसनिंग में क्या ओवरऑल जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए? आई थिंक लिसनिंग में सबसे मेन व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन इज़ जब भी आप कोई पैसेज और जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं एंड यू हैव मिस्ड वन कॉलम, डू नॉट गेट स्टक. प्लीज़ डू नॉट गेट स्टक ऑन दैट, बिकॉज अगर आप एक उसमें रह गए ना, तो आपके नेक्स्ट 2-3 आंसर और या 4-5 और भी निकल सकते हैं. सो व्हाट्स गॉन इज़ गॉन, जस्ट लीव इट. लेटर ऑन यू कैन फिल इट एज पर योर जजमेंट के इसमें कुछ आ सकता है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप भर ही दो. बट एटलीस्ट जो आगे के आने वाले हैं वो आप अच्छे से अटैम्प्ट करो. सेकेंड थिंग व्हाट आई हैव सीन दैट इज़ कि आपको डेट्स एंड नंबर्स you have to be very sure कि you are marking it right. So lot of time इसमें क्या होता है ना, वो लोग ज़ीरो को ओ बोलते हैं. So you have to be careful about such minute details and be aware कि this is how you could probably pronounce it. Then here I would one more suggestion is that आप Netflix देख सकते हैं. I think lot of time we criticize कि you do not watch Netflix, but what you can do right now is pick up a nice good series in English, and maybe daily half an hour or 1 hour, whatever you want to spend your time on, watch it. Because if you do this for 2 weeks continuously, right, what happens is that even while speaking, it becomes much more easier for you to converse in that language, and also it is easy for you to listen in that language. So whenever you are preparing for the particular test, what happens is that it is very natural for you to comprehend on it. एंड लास्टली इसमें है कि प्लीज़ बी श्योर कि लिसनिंग में बहुत टाइप के पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. जैसे डायग्राम टेस्ट होते हैं जो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, फ्लो चार्ट्स हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है. सो मेक श्योर स्पेशली जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, यू आर अवेयर कि कैसे कैसे काइंड ऑफ डायग्राम्स आ सकते हैं, एंड फोकस मोर ऑन इट. रीडिंग. So reading में basically I do not have much suggestion, but I would only say practice is your best friend, because आप जितने passages practice करोगे, आपको पता है आप right हो या wrong हो. I think one इसमें काफ़ी confusion होता है कि हम पहले questions पढ़ें या passages पढ़ें. I would say do what works best for you. आप दोनों technique apply कीजिए. Personally for me, reading the question first and then reading the passage really helps me to mark the answers more correct, and fill in up the answers faster also. But I would really suggest कि whatever suits you more, do that. राइटिंग में अगेन एज आई हैड डिस्कस्ड अर्लियर, उसमें मेन टिप यही है कि फर्स्टली इज़ दैट प्लीज़ मेक श्योर आपका टाइपिंग स्पीड इज़ राइट. इफ़ यू आर गिविंग अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अगर राइटिंग है तो देन दैट डज नॉट मैटर. Important tip is also that you divide the paragraphs and do not keep it one whole paragraph. So suppose आपको एक पैराग्राफ या डायग्राम एक्सप्लेन करना है, तो उसको आप 3 डिफरेंट पैसेजेस में लाइक बताइए, लाइक इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. ऑल्सो आई अटैच अ स्क्रीनशॉट ओवर हियर. इट्स गिवन इन द बुक, एवरीथिंग इज गिवन इन द बुक, एंड आई थिंक अगर आप वो बुक को फॉलो कर ले अच्छे से, तो देयर इज़ नो रीज़न दैट यू विल स्कोर लेस देन 7 फॉर श्योर. बट उसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं, यू कैन यूज़ दैट. सो व्हाट आई डिड वाज आई रोट अ पैसेज बाय माई सेल्फ, देन आई सॉ कि वो बुक्स में वो लिस्ट में क्या क्या वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं. सिमिलरली आई स्विच सम ऑफ द वर्ड्स टू मेक द पैराग्राफ साउंड एंड सीम मोर अपीलिंग. सो सपोज आपके सिनोनिम्स बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं इधर. सो इफ़ यू वुड से कि इन समरी है, तो उसकी जगह इन कंक्लूजन यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वी नो कि रेपिटेशन में भी मार्क्स कट सकते हैं.
सो इसलिए वी शुड ट्राई टू नो एटलीस्ट फॉर ईच वर्ड 2 से 3 synonyms पता हो तो हमें ईज़ी पड़ जाता है। If you want to know what are the resources in addition to the IELTS book that you can use, please comment down below, and you can DM me on my Instagram handle over here, and I will send you all the resources that I have used during my preparation. I hope you found the video useful. Please like, comment, share, and subscribe. There are more videos coming your way, and if you have any doubts, please leave them in the comment section below. I am sure to answer them as much as I can to my capability. And have a nice day. Bye bye.